The new Social Security rules take effect in 2026. Yes, we must align our policies now. I'll update the compliance models. Good. Let's review by next week. आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम गहराई से समझने वाले हैं द सोशल सिक्योरिटी रूल्स 2026 के उस नए ब्लूप्रिंट को जिसने भारत में नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों और श्रमिकों के अधिकारों की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। कंप्लायंस और एचआर से जुड़े हर प्रोफेशनल के लिए ये किसी बड़े बदलाव से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस नए फ्रेमवर्क के अंदर चलते हैं। जरा सोचिए, पहले कंप्लायंस का ढांचा कितना उलझा हुआ था। कर्मचारी मुआवजा, ईएसआई और मैटरनिटी बेनिफिट जैसे 12 अलग-अलग पुराने और खंडित कानून हुआ करते थे। लेकिन अब इन सबको हटाकर सिर्फ एक सिंगल यूनिफाइड फ्रेमवर्क तैयार कर दिया गया है। ये कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि सिस्टम को पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन करने की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल है। इस 47 सूत्रीय नए कानून को आसानी से समझने के लिए हम आज के इस एजेंडे को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। एक नया एकीकृत ढांचा, प्रमुख कर्मचारी लाभ, गिग इकोनॉमी के नियम, अनुपालन की समय सीमाएं और अंत में जुर्माने और प्रवर्तन। भाग 1, एक नया एकीकृत ढांचा। इस 2026 के अपडेट की पूरी बुनियाद टिकी है डिजिटल फर्स्ट अप्रोच पर। कागजी फाइलों का जमाना अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सरकार अब रियल टाइम निगरानी कर रही है। अब हर चीज श्रम सुविधा पोर्टल जैसे आधार सीडेड एपीआई ड्रिवन सिस्टम से जुड़ गई है। हर वर्कर को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कोई कर्मचारी काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उसका डेटा और उसे मिलने वाले फायदे बिना किसी रुकावट के उसके साथ साथ चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम कंसेप्ट को समझना जरूरी है, स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट। आखिर ये है क्या? आसान शब्दों में कहें तो किसी योगदान अवधि के दौरान दिए गए कुल वेतन को उन दिनों की संख्या से डिवाइड करके निकाला गया औसत दैनिक वेतन ही स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट है। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे चलकर बीमारी, मातृत्व और विकलांगता के दौरान मिलने वाले पेआउट्स की सारी कैलकुलेशन इसी एक दर पर आधारित होगी। भाग 2, प्रमुख कर्मचारी लाभ। अब बात करते हैं असल फायदों की। कानून ने सामाजिक सुरक्षा योगदान के लिए गणित बिल्कुल फिक्स कर दिया है। ईएसआई के मामले में नियोक्ताओं को 3.25% और कर्मचारियों को 0.75% का योगदान देना है। और इसके बदले में मिलता क्या है? बीमारी की स्थिति में स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट का 70% तक कवर मिलता है। कुछ खास और गंभीर बीमारियों के मामले में तो ये एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट 80% तक चला जाता है। किसी कर्मचारी के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर कानून उनके आश्रितों को बहुत ही स्पष्ट और संरचित तरीके से सुरक्षा देता है। आश्रितों को स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट का 90% हिस्सा कानूनी रूप से मिलता है। इसके बंटवारे का भी एक तय फॉर्मूला है। विधवा या विधुर को इस दर का 3/5 हिस्सा मिलता है, जबकि 25 साल से कम उम्र के बेटों, अविवाहित बेटियों और विधवा माँ को 2/5 हिस्सा दिया जाता है। 50 कंप्लायंस की दुनिया में ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि फैसिलिटी प्लानिंग के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। जिस भी संस्थान में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए अब ये अनिवार्य है कि वे 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कानूनी रूप से मान्य एक क्रैश यानी शिशु पालना गृह की सुविधा मुहैया कराएं। खैर, अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी कंपनी के पास क्रैश बनाने की जगह ही न हो तो क्या किया जाए? कानून ने इसका भी एक रास्ता निकाला है। फिजिकल क्रैश की जगह प्रति बच्चे कम से कम 500 रुपए महीने का भत्ता दिया जा सकता है, जो अधिकतम 2 बच्चों तक सीमित होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये विकल्प तभी लागू होगा जब मान्यता प्राप्त यूनियन या बहुसंख्यक कर्मचारियों के साथ बाकायदा एक औपचारिक समझौता किया गया हो। एक और अहम आंकड़ा है 5, वेतन, अटेंडेंस और महिला कर्मचारियों से जुड़े जितने भी कंप्लायंस रजिस्टर हैं, उन्हें अब पूरे 5 कैलेंडर वर्षों तक उनके ओरिजिनल फॉर्मेट में सुरक्षित रखना अनिवार्य है। डेटा मेंटेनेंस को लेकर यह एक बहुत ही सख्त नियम है। भाग 3, गिग इकोनॉमी के नियम। साल 2026 के इस कानून का सबसे बड़ा और शायद सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है गिग, अनऑर्गेनाइज्ड और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार नेशनल सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर लाना। यहाँ एग्रीगेटर की परिभाषा को बहुत ही चालाकी से व्यापक रखा गया है। चाहे आप वर्कर्स को सीधे हायर करें या फिर किसी सब्सिडियरी, एलएलपी या थर्ड पार्टी वेंडर के जरिए, आप एग्रीगेटर ही कहलाएंगे। मतलब अब कोई भी कंपनी थर्ड पार्टी का बहाना देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। तो एक गिग वर्कर इन फायदों का हकदार कब बनता है? नियम एकदम स्पष्ट है। अगर किसी वर्कर ने पिछले वित्तीय वर्ष में किसी एक एग्रीगेटर के साथ कम से कम 90 दिन या फिर अलग अलग एग्रीगेटर्स को मिलाकर कुल 120 दिन काम किया है, तो वो एलिजिबल हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एग्रीगेटर्स को अब हर एक वर्कर की डेली एंगेजमेंट को बहुत ही बारीकी से ट्रैक करना होगा। और इसके साथ ही आता है एक बड़ा वित्तीय दायित्व 5% का। एग्रीगेटर्स के पास ये विकल्प है कि वे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को किए गए कुल पेमेंट का 5% हिस्सा एक खास सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करें। बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है।
एग्रीगेटर्स को अपने ऑपरेशंस भी पूरी तरह से बदलने होंगे। 45 दिनों के भीतर सभी वर्कर्स की एपीआई के जरिए ऑनबोर्डिंग करनी होगी। इतना ही नहीं, नए वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन एकदम रियल टाइम में होना चाहिए और उनकी एंगेजमेंट का मंथली अपडेट सरकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा। ये डेटा मैनेजमेंट के लिहाज से एक बहुत बड़ा टास्क है। भाग 4, अनुपालन और मुख्य समय सीमाएं। अब जरा कंप्लायंस कैलेंडर पर नजर डालते हैं। नए वित्तीय वर्ष में डेडलाइंस को लेकर कोई ढील नहीं दी गई है। 28 फरवरी को यूनिफाइड एनुअल रिटर्न अपलोड करना है। उसके बाद 30 जून को एग्रीगेटर्स का प्रोविजनल रिटर्न और 31 अक्टूबर को फाइनल रिटर्न फाइल करना है। और फिर 10 दिसंबर तक कॉर्पोरेशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट अडॉप्ट कर लेगा। ये ऐसी तारीखें हैं जिन्हें किसी भी हाल में मिस नहीं किया जा सकता। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए सेस यानी उपकर के नियमों में भी बड़ा बदलाव आया है। अब ये पूरा प्रोसेस सेल्फ असेसमेंट पर शिफ्ट हो गया है। चार्टर्ड इंजीनियर फॉर्म 16 में लागत को प्रमाणित करेगा। दिलचस्प बात यह है कि असेसिंग ऑफिसर को 180 दिनों के भीतर इसकी स्क्रूटनी करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो सेल्फ असेसमेंट फाइल किया गया था उसी को फाइनल मान लिया जाएगा। भाग 5, जुर्माना और प्रवर्तन। और अगर इन नए मानकों का पालन नहीं किया गया तो क्या होगा? सीधे शब्दों में कहें तो भारी आर्थिक जुर्माना। अगर सेस या एग्रीगेटर के फंड में पैसा जमा करने में डिफॉल्ट होता है तो हर महीने 1% की दर से ब्याज लगेगा। और अगर किसी घायल कर्मचारी को मुआवजा देने में देरी होती है तो उस पर सीधा 12% का सालाना ब्याज देना होगा। डिफॉल्ट करना बहुत महंगा सौदा है। अगर कोई सोचता है कि इन जुर्मानों को अदालत में आसानी से चुनौती दी जा सकती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईपीएफ ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए भी पहले 25% रकम जमा करनी होगी। और तो और अगर नियमों का बार बार उल्लंघन होता है तो पहली बार दोष साबित होने पर नकद लाभ को 3 महीने के लिए रोका जा सकता है। बकाया रकम की वसूली बिल्कुल जमीन के लगान यानी लैंड रेवेन्यू की तरह की जाएगी। तो इस पूरी चर्चा के बाद जब पूरा कानून रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी और भारी जुर्मानों के इर्द गिर्द फिर से लिखा जा चुका है, एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या आज के कॉर्पोरेट और एचआर सिस्टम्स सच में इन नए एपीआई ड्रिवन रियल टाइम मैंडेट्स को संभालने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर संगठन को आज ही गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। एक पल के लिए जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। एक कैब ड्राइवर है, सुबह सुबह वो किसी एक कंपनी की ऐप चालू करके गाड़ी चला रहा है। जो कि आजकल बहुत आम बात है। बिल्कुल। फिर दोपहर होते होते वो किसी दूसरी कंपनी की ऐप से खाना डिलीवर करने लगता है और शाम को तीसरी कंपनी से पार्सल पहुंचाने का काम पकड़ लेता है। हाँ, एक गिग वर्कर की आम जिंदगी। सही कहा। अब अगर हम पुराने कागजों और कानूनों के हिसाब से देखें तो वो असल में किसी का भी कर्मचारी नहीं है। मतलब सिस्टम में उसकी कोई ठोस गिनती नहीं है। हाँ, वो बस एक स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर मान लिया जाता था। हाँ, लेकिन अब एक नया सरकारी नियम आया है जो सीधा सीधा कहता है कि उस ड्राइवर ने एक ही दिन में 3 दिन का काम कर लिया है। अरे वाह। और सबसे बड़ी बात, उन तीनों कंपनियों को इसके लिए अपनी जेब ढीली कर दी पड़ेगी और उसे बाकायदा सामाजिक सुरक्षा देनी होगी। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। जा रहा है। देखिए, ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है, क्योंकि दशकों से चला आ रहा हमारा जो पुराना श्रम कानून था ना, वो एक ऐसे ढांचे पे टिका था जो आज के इस डिजिटल और गिग इकोनॉमी वाले युग में पूरी तरह से हाँफने लगा था। पुराने नियम नई दुनिया में काम नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास इस गहन विश्लेषण के लिए जो दस्तावेज है, द सोशल सिक्योरिटी सेंट्रल रूल्स 2026, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया कोई मामूली कागज का पुलिंदा नहीं है। मैं बता रही हूँ, ये भारत के वर्कफोर्स के लिए एक पूरी तरह से नया आर्किटेक्चर है। और यही वजह है कि आज हम इस भारी भरकम कानूनी दस्तावेज की परतों को खोलने वाले हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट या अदालतों में बैठे वकीलों के काम की चीज नहीं है। एकदम सही बात है। कोई भी इंसान जो सुबह उठकर काम पर जाता है, चाहे वो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के चमकदार ऑफिस में हो, किसी कंस्ट्रक्शन साइट की धूल के बीच खड़ा हो, या फिर अपने फोन पर ऐप के जरिए काम ढूंढ रहा हो, ये नया नियम हर उस इंसान की जिंदगी का एक तरह से कहें तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदलने वाला है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो नियमों की इन जटिल धाराओं में गोता लगाने से पहले हमें इसके बुनियादी ढांचे को समझना होगा। मतलब आखिर इतने बड़े देश में इस नए सिस्टम को लागू कैसे किया जाएगा। देखिए, इस पूरे दस्तावेज की नींव 2 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। पहला है एकीकरण यानी कंसोलिडेशन, और दूसरा है पूर्ण डिजिटाइजेशन। अगर हम पुराने दौर की बात करें तो मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एकदम अलग कानून था। और ईपीएफ के लिए अलग दफ्तर होता था। बिल्कुल, ईपीएफ अलग, ग्रेचुइटी के नियम एकदम अलग दिशा में जाते थे, और ईएसआई का अपना अलग ही जाल था। कुल मिलाकर ये 12 अलग अलग नियम थे। एक नियोक्ता या जो कंपनी का मालिक होता था, उसे इन 12 अलग अलग नियमों के तहत 12 अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे। बाप रे, 12 रजिस्टर। हाँ, लेकिन इन 2026 के नियमों ने उस पूरी पुरानी व्यवस्था को जड़ से खत्म कर दिया है। उन 12 नियमों को मिलाकर एक सिंगल सुव्यवस्थित ढांचा बना दिया गया है। ये तो कुछ
ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने घर के 12 अलग अलग पुराने और खराब हो चुके टीवी रिमोट्स को उठाकर बाहर डस्टबिन में फेंक दिया हो और उनकी जगह एक स्मार्ट यूनिवर्सल रिमोट अपना लिया हो। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है। अब सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल हो रहा है। लेकिन दस्तावेज पढ़ते हुए मुझे जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये है कि अब कागजी रजिस्टरों का जमाना आधिकारिक तौर पर मतलब पूरी तरह से खत्म हो गया है। ई श्रम सुविधा पोर्टल और आधार कार्ड की सीडिंग अब कोई विकल्प नहीं रह गई है। नहीं, अब ये पूरी तरह से अनिवार्य है। हाँ, हर कंपनी को अपने सभी डिजिटल रजिस्टर 5 साल तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखने ही होंगे। और यही इस दस्तावेज का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। डिजिटल फर्स्ट होना अब कोई सुविधा नहीं है बल्कि ये देश का कानून है। लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा तकनीकी जोखिम या कहें एक डर पैदा होता है। कैसा डर? देखिए, भारत में जहां असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है, कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, दिहाड़ी कामगार हैं, तो क्या हर मजदूर को आधार और ऑनलाइन पोर्टल से पूरी तरह जोड़ना उनके लिए एक सुविधा साबित होगी, या फिर ये एक ऐसा तकनीकी फिल्टर बन जाएगा जो उन्हें सिस्टम से ही बाहर कर दे? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि किसी दूर दराज के इलाके में सर्वर डाउन है, या किसी मजदूर का अंगूठा उस बायोमेट्रिक मशीन पर मैच नहीं हो रहा क्योंकि उनके हाथ खुरदरे हो जाते हैं काम से, तो क्या वो अपने हकों से महरूम हो जाएगा? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो आपकी ये चिंता शुरुआत में बहुत स्वाभाविक लगती है, लेकिन दस्तावेज बनाने वालों ने इस जमीनी समस्या को बहुत गहराई से समझा है। अच्छा, तो इसका क्या समाधान निकाला है उन्होंने? समाधान ये है कि आधार सीडिंग को अनिवार्य करने के पीछे का असली मकसद किसी को सिस्टम से बाहर निकालना नहीं है, बल्कि पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है। इसे हम एक जमीनी हकीकत के उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। भारत में मजदूरों का पलायन या माइग्रेशन एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अब मान लीजिए कोई निर्माण मजदूर आज बिहार में एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, कल वो बेहतर काम की तलाश में महाराष्ट्र चला जाता है। पुराने सिस्टम में तो उस मजदूर का पुराना सारा रिकॉर्ड वहीं बिहार में ही खत्म हो जाता था। उसे नए राज्य में जाकर एक नए मजदूर की तरह शुरुआत से सब कुछ दर्ज करवाना पड़ता था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रताड़ना थी उसके लिए। हाँ, बिल्कुल। एक वर्कर के लिए कागज लेकर इधर उधर दौड़ना आसान नहीं है। सही कहा। और ज्यादातर मामलों में वो अपने पुराने लाभ कभी ले ही नहीं पाता था। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन और आधार से जुड़ गया है, वो मजदूर जहां भी जाएगा उसकी डिजिटल पहचान उसके साथ सफर करेगी। हाँ, मतलब क्लाउड में। हाँ, नियम ये स्पष्ट करता है कि जब वो नए राज्य में किसी नए ठेकेदार के रजिस्टर या मस्टर रोल में जुड़ेगा तो उस ठेकेदार को 30 दिन के भीतर उस मजदूर का डिजिटल रजिस्ट्रेशन अपडेट करना ही होगा। ओ, ये तो बहुत बढ़िया है। और सबसे अहम बात, जिसका डर आपको था, दस्तावेज में साफ लिखा है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन अपडेट न होने या किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से, जैसे वो सर्वर डाउन होने वाली बात। हाँ, किसी भी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से किसी भी वर्कर को उसके लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब अब पहचान पुरानी फाइलों में दबकर नहीं रह जाएगी बल्कि क्लाउड पर सुरक्षित है। ये सच में कामगारों को एक नई ताकत देने वाला कदम है। और जब हम डिजिटल ट्रैकिंग और क्लाउड डेटा की बात कर ही रहे हैं तो हमें उस वर्ग की बात जरूर करनी चाहिए जो आज के समय में पूरी तरह से तकनीक पर ही निर्भर है। आप गिग वर्कर्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, गिग इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। चैप्टर 8। अगर मैं कहूं कि इस पूरे नियम का अगर कोई सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है तो वो यही चैप्टर है। मुझे भी यही लगा था पढ़ते वक्त, क्योंकि अब तक भारत में गिग वर्कर्स जैसे कैब ड्राइवर्स हो गए, फूड डिलीवरी पार्टनर्स हो गए, या जो ऐप के जरिए घर पर सर्विस देने वाले लोग हैं, वो सब एक कानूनी ग्रे एरिया में काम कर रहे थे। हाँ, वो ना तो पूरी तरह से कर्मचारी माने जाते थे और ना ही आजाद कारोबारी। एकदम सही। लेकिन ये नया नियम पहली बार उन्हें एक स्पष्ट और ठोस कानूनी पहचान दे रहा है। दस्तावेज कहता है कि एग्रीगेटर्स यानी जो टेक कंपनियां इन एप्स को चलाती हैं, उन्हें नियम लागू होने के महज 45 दिनों के भीतर, सिर्फ 45 दिन? हाँ, महज 45 दिनों के भीतर अपने सभी गिग वर्कर्स का पूरा डेटा सरकार को सौंपना होगा। और वो भी कोई एक्सेल शीट ईमेल करके नहीं, बल्कि एपीआई के जरिए। तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। एपीआई का मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर ब्रिज स्थापित करना जहां कंपनियों के सर्वर बिना किसी इंसान के दखल के सीधे सरकारी पोर्टल के साथ लगातार डेटा साझा करेंगे। और ये कोई साल में एक बार होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये एक रियल टाइम व्यवस्था है। अगर आज सुबह कोई नया मजदूर ऐप से जुड़ता है तो उसका रजिस्ट्रेशन उसी दिन पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए। यहाँ मामला सच में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि मैंने इस हिस्से में एक ऐसा विशिष्ट नियम पढ़ा है जो मुझे लगता है कंपनियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। कौन सा नियम? दस्तावेज ये तय करता है कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ पाने के लिए किसी वर्कर को कितने दिन काम करना होगा। अगर एक मजदूर एक ही एग्रीगेटर के साथ काम कर रहा है तो 90 दिन का जुड़ाव अनिवार्य है। 90 दिन। लेकिन अगर वो अलग अलग ऐप्स पर काम करता है तो ये सीमा 120 दिन की है। और यहीं पर वो नियम आता है जिसका जिक्र मैंने एकदम शुरुआत में किया था। वो 3 ऐप्स वाला उदाहरण? हाँ,
अगर एक गिग वर्कर एक ही दिन में 3 अलग-अलग प्रतिस्पर्धी ऐप्स के लिए काम करता है तो कानून की नजरों में उसे 3 दिन का एंगेजमेंट माना जाएगा। ये प्रावधान विशेष रूप से गिग इकोनॉमी की जमीनी सच्चाई को देखकर बनाया गया है, जहां मजदूर अपनी आजीविका चलाने के लिए दिन भर मल्टीटास्किंग करते हैं। बिल्कुल। और साथ ही कंपनियों को अब एक विशेष गिग वर्कर फंड में अपना योगदान देना होगा, जो कि उनके द्वारा वर्कर्स को किए गए कुल भुगतान का 5% तक हो सकता है। कागज पर तो ये विचार बेहतरीन है। मजदूरों के लिए ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। लेकिन अगर हम कंपनियों के नजरिए से सोचें तो हर टेक कंपनी अपना डेटा तिजोरी में बंद करके रखना चाहती है। हाँ, डेटा ही तो उनका असली पैसा है। बिल्कुल। कौन सा वर्कर कब लॉगिंग कर रहा है, कितनी देर ऑनलाइन है, ये उनका सबसे कीमती राज होता है। तो क्या ये नियम उन कंपनियों के लिए एक तकनीकी दुस्वप्न नहीं बन जाएगा, जहां उन्हें अपना हर दिन का एंगेजमेंट डेटा एक सेंट्रल सर्वर पर डालना होगा? क्या कंपनियां इसके लिए आसानी से राजी होंगी? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। कोई भी कॉर्पोरेशन अपनी मर्जी से इतना संवेदनशील डेटा नहीं देना चाहेगा, और सरकार भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो उन्होंने क्या किया है इसके लिए? इसीलिए इस नियम में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सजा और जुर्माने का बहुत ही कड़ा इंतजाम किया गया है। अगर कोई एग्रीगेटर समय सीमा चूकता है, जैसे मान लीजिए प्रोविजनल रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून है और फाइनल रिटर्न की 31 अक्टूबर है, और कंपनी डेटा या पैसा जमा करने में देरी करती है, तो उस पर प्रति माह 1% का भारी ब्याज लगाया जाएगा। 1% प्रति माह? मतलब साल का 12% ब्याज? बिल्कुल। ये तो किसी भी भारी भरकम कमर्शियल लोन से भी ज्यादा है। और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कंपनी पूरी तरह से सिस्टम के साथ जुड़ नहीं जाती। हाँ, तो कंपनियों के पास अपने सिस्टम्स को पारदर्शी बनाने के अलावा अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। यही इस रणनीति का मूल आधार है। वित्तीय जुर्माने का डर कंपनियों को तकनीक के जरिए जवाबदेह बना रहा है। सही कहा। अच्छा, ये तो हुई उस गिग इकोनॉमी की बात जो अभी कानूनी दायरे में आई है। लेकिन उन पारंपरिक कर्मचारियों का क्या, जो सालों से कारखानों में, दफ्तरों में और दुकानों में काम कर रहे हैं? हाँ, जो ट्रेडिशनल वर्कफोर्स है। बिल्कुल, जहां हाजिरी आज भी कई जगहों पर पुराने तरीकों से लगती है। उनके लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी ये नया सिस्टम कैसे ले रहा है? इसके लिए हमें ESI यानी कर्मचारी राज्य बीमा के नए गणित को समझना होगा। पारंपरिक कर्मचारियों के लिए इसे अब बहुत सटीक बना दिया गया है। नया नियम स्पष्ट करता है कि नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर को वेतन का 3.25% और कर्मचारी को 0.75% योगदान देना होगा। ये तो स्टैंडर्ड दरें हो गई। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत ही शानदार नीतिगत बदलाव विकलांग व्यक्तियों के लिए किया गया है। वो क्या है? अगर कोई नियोक्ता किसी विकलांग व्यक्ति को अपने यहाँ काम पर रखता है, तो पहले 3 साल तक नियोक्ता के हिस्से का जो 3.25% योगदान होता है ना, वो कंपनी को नहीं देना होगा। अच्छा, तो वो कौन देगा? वो पूरा हिस्सा सीधे केंद्र सरकार भरेगी। अरे वाह, ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कानून सिर्फ सजा नहीं देता बल्कि अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित भी करता है। बिल्कुल, ये नियोक्ताओं को विकलांग व्यक्तियों को नौकरी देने के लिए प्रेरित करने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। हाँ, और अगर हम इसी तरह स्वास्थ्य लाभों को देखें तो दस्तावेज सिकनेस बेनिफिट को कैसे परिभाषित करता है? इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बांटा गया है। सामान्य बीमारी के लिए लाभ दर 70% रखी गई है, लेकिन गंभीर बीमारियों के मामले में ये सुरक्षा जाल और मजबूत हो जाता है। मतलब कोई बड़ी बीमारी होने पर? हाँ, अगर कोई कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी का शिकार होता है तो उसे 730 दिनों तक 80% की दर से लाभ मिलेगा। 730 दिन यानी लगभग 2 साल तक? सही कहा। और अगर काम के दौरान कोई दुर्घटना होती है जिसमें डिसेबलमेंट हो जाए या कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, तो उसके आश्रितों को 90% लाभ दिया जाएगा। तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो बीमारी या संकट जितना बड़ा और गंभीर होगा, ये सामाजिक सुरक्षा का जाल उतना ही ज्यादा मजबूत और घना होता जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही मानवीय सोच है। हाँ, अब इसी मानवीय सोच के दायरे में मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी बेनिफिट की बात करते हैं। मैंने इसमें कुछ बहुत दिलचस्प चीजें पढ़ी हैं। हाँ, मातृत्व लाभ के तहत अब 12 सप्ताह की सवेतन छुट्टी तय की गई है। इसके अलावा 2 प्रसवों के लिए 15,000 रुपए का मेडिकल बोनस भी दिया जाएगा। लेकिन इस हिस्से में जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है क्रेच या डे केयर की सुविधा का नियम। दस्तावेज कहता है कि 50 से अधिक कर्मचारियों वाले हर कार्यस्थल के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में एक क्रेच होना अनिवार्य है। और जगह को लेकर भी कुछ नियम है ना? हाँ, इस क्रेच में हर बच्चे के लिए कम से कम 10 वर्ग फुट की जगह होनी ही चाहिए। देखिए, ये नियम बहुत अच्छा है ताकि कामकाजी माताएं बेफिक्र होकर काम कर सकें। लेकिन इस हिस्से को पढ़ते हुए मेरी नजर एक खास क्लॉज पर गई और मैं इसे लेकर एक बहुत ही तीखा सवाल उठाना चाहता हूँ। बताइए, क्या सवाल है? नियमों में एक विकल्प दिया गया है कि अगर आपसी सहमति हो तो कंपनी क्रेच बनाने की जगह प्रति बच्चा 500 रुपए महीने का क्रेच अलाउंस दे सकती है। हाँ, ये प्रावधान है उसमें। अब एक व्यावहारिक सच्चाई देखिए, आज के समय में खासकर शहरों में 500 रुपए महीने में कौन सा डे केयर आता है?
मतलब 500 रुपए में तो शायद एक दिन का भी अच्छा क्रैच नहीं मिलता। ये बात तो है। तो क्या ये नियम जानबूझकर कंपनियों को असल क्रैच बनाने के भारी खर्चे और जिम्मेदारी से बचने का एक कानूनी लूपहोल नहीं दे रहा है? वो तो 500 रुपए पकड़ाकर हाथ खड़े कर देंगे। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इस नियम के कानूनी भाषा की गहराई में जाएं, तो ये 500 रुपए का विकल्प कोई ऐसा लूपहोल नहीं है जिसका इस्तेमाल मैनेजमेंट अपनी मर्जी से कर ले। मतलब? ये कोई एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। क्या मतलब? कंपनी अपनी मर्जी से ये अलाउंस नहीं थोप सकती कर्मचारियों पर? बिल्कुल नहीं। ये नियम बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि ये 500 रुपए का अलाउंस केवल तभी लागू किया जा सकता है जब सोल नेगोशिएटिंग यूनियन या नेगोशिएटिंग काउंसिल या फिर कर्मचारियों के बहुमत के साथ कोई लिखित और ठोस समझौता हुआ हो। ओ अच्छा। हाँ, इसका मतलब है कि जब तक कारखाने के मजदूर या उनकी यूनियन खुद इस बात पर राजी न हो जाएं, मैनेजमेंट अपनी मर्जी से क्रैश बंद करके उनके हाथ में 500 रुपए नहीं पकड़ा सकता। ओह, तो इसका मतलब यह है कि असल में यहाँ पावर बैलेंस करने की कोशिश की गई है? बिल्कुल। अगर मजदूरों को लगता है कि उनके इलाके में डे केयर की सुविधा नहीं है और उन्हें कंपनी का क्रैच ही चाहिए, तो कंपनी को वो जगह बनानी ही पड़ेगी। यह फैसला कर्मचारियों के सामूहिक हाथ में है, मैनेजमेंट के हाथ में नहीं। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। ये नियम असल में कर्मचारियों को नेगोशिएशन टेबल पर एक मजबूत स्थिति में रखता है। चलिए, स्वास्थ्य और मातृत्व की इन तत्कालीन जरूरतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा की ओर चलते हैं। आप ग्रेचुइटी की बात कर रहे हैं। हाँ। एक कर्मचारी के लिए सबसे बड़ी आर्थिक सुरक्षा होती है उसकी ग्रेचुइटी। हाँ। और मेरे हिसाब से इस दस्तावेज ने ग्रेचुइटी के पूरे विचार को ही जड़ से बदल दिया है। ऐतिहासिक रूप से हम सब यही मानते आए हैं कि ग्रेचुइटी एक कर्मचारी को 5 साल या उससे ज्यादा समय तक एक ही कंपनी में टिके रहने के लिए मिलने वाला एक रिटायरमेंट गिफ्ट है। हाँ, एक तरह से वफादारी का इनाम। सही कहा। लेकिन काम करने का तरीका अब बदल रहा है। अब फिक्स टर्म कर्मचारियों का दौर है, जो लोग 1 साल या 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर किसी खास प्रोजेक्ट के लिए रखे जाते हैं। नए नियमों के तहत ऐसे फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए अब केवल 1 साल की सेवा के बाद ही ग्रेचुइटी अनिवार्य कर दी गई है। सिर्फ 1 साल में? हाँ। और मैंने ये भी पढ़ा कि इसमें एक और दिलचस्प पेंच है। अगर किसी फिक्स टर्म कर्मचारी ने 6 महीने से अधिक काम कर लिया है, तो उस अवधि को पूरा 1 साल मान लिया जाएगा और वो ग्रेचुइटी का हकदार बन जाएगा। बिल्कुल। और जैसे ही वो योग्य होता है, कंपनी को आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर हर हाल में उसका भुगतान करना ही होगा। ये काम की बदलती प्रकृति का बहुत बड़ा प्रमाण है। मुझे लगता है कि ये नियम ग्रेचुइटी को कंपनी के प्रति वफादारी के इनाम की श्रेणी से निकालकर एक कर्मचारी के बुनियादी अधिकार की श्रेणी में ला खड़ा करता है। हाँ, काम किया है तो पैसा मिलेगा। बिल्कुल, आपने काम किया है तो आपको आपका हक मिलेगा। इसी तरह का एक बड़ा और आक्रामक बदलाव मुझे निर्माण क्षेत्र यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के नियमों में भी देखने को मिला। कंस्ट्रक्शन सेस का मामला? ये तो हमेशा से लाल फीताशाही का शिकार रहा है। हाँ, बाबू लोग फाइलें दबाकर बैठ जाते थे। पहले सरकारी अधिकारी फाइलों को सालों तक अटका कर रखते थे, लेकिन अब इस नए नियम ने एक सेल्फ असेसमेंट का तरीका पेश किया है। अब बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी खुद अपना आकलन करके एक चार्टर्ड इंजीनियर से उसे प्रमाणित करवा सकती है। लेकिन इसमें तो सरकारी अधिकारी यानी जो असेसिंग ऑफिसर होता है, उसका पूरा नियंत्रण ही खत्म हो जाएगा। नियंत्रण है, लेकिन एक सख्त टाइमर के साथ। टाइमर? हाँ, अगर सरकारी अधिकारी 180 दिनों के भीतर उस सेल्फ असेसमेंट पर कोई आदेश पारित नहीं करता या कोई आपत्ति नहीं उठाता है, तो उस आकलन को ही अंतिम मान लिया जाएगा। इसे कानूनी भाषा में डीम्ड फाइनल कहते हैं। वाह, मतलब अगर सरकारी बाबू फाइल दबाकर 6 महीने तक बैठा रहा तो फैसला खुद ब खुद बिल्डर के हक में पास हो जाएगा। बिल्कुल। ये लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार को सिस्टम से बाहर निकालने का एक बहुत ही शानदार और स्वचालित तरीका है। सिस्टम अब इंसानी सुस्ती का इंतजार नहीं करेगा। ये पूरे अनुपालन ढांचे को तेज और पारदर्शी बनाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन अब तक हमने अधिकारों की बात की, स्मार्ट सिस्टम की बात की। एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि कोई भी नियम तब तक कारगर नहीं होता जब तक कि उसे तोड़ने पर कोई सख्त सजा का प्रावधान ना हो। हाँ, सजा का डर तो होना ही चाहिए। तो द स्टिक यानी जुर्माने के प्रावधान क्या कहते हैं? अगर कोई कंपनी किसी मजदूर का हक मार ले तो क्या होगा? जैसा कि हमने पहले देखा, दस्तावेज ने समय सीमा का एक बहुत ही सख्त जाल बुना है। अगर किसी कर्मचारी को मुआवजा देने में 30 दिन की भी देरी होती है, तो कंपनी को उस रुकी हुई राशि पर 12% सालाना की दर से साधारण ब्याज देना होगा, जो कि काफी ज्यादा है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी EPF ट्रिब्यूनल में किसी आदेश के खिलाफ अपील करना चाहती है, तो उसे पहले विवादित राशि का 25% नकद जमा करना होगा। मतलब आप सिर्फ केस को अदालतों में लटकाने के लिए अपील नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। पहले 25% पैसा टेबल पर रखिए, फिर अपनी बात कहिए। ये कंपनियों पर लगाम कसने के लिए बेहतरीन है। लेकिन इसमें एक ऐसा नियम भी है जो कर्मचारियों पर भी उतनी ही सख्ती से लागू होता है, और मैं उसे लेकर थोड़ा असहज हूँ। आप सेक्शन 133O की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल वही। ये नियम कहता है कि अगर किसी कर्मचारी को धोखाधड़ी करने, गलत जानकारी देने या कोई ऐसा जुर्म करने का दोषी पाया जाता है जो सेक्शन 133O के दायरे में आता है, तो उसके सभी नकद लाभ रोक दिए जाएंगे। पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 महीने के लिए और अगली बार की गलती पर 6 महीने के लिए। तो इस सब का मतलब क्या है? मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहता हूँ। पूछिए। अगर कोई वर्कर सच में धोखाधड़ी करता है
तो उसे सजा मिलनी चाहिए। उसके नकद लाभ रोक देना तर्कसंगत है। लेकिन क्या इसका सीधा और भयानक असर उस वर्कर के बेगुनाह परिवार और आश्रितों पर नहीं पड़ेगा? ये चिंता जायज है आपकी। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि आश्रितों को 90% लाभ मिलता है। अगर वर्कर की गलती की वजह से परिवार का राशन पानी और मेडिकल सुविधा बंद हो जाए तो क्या यह सिस्टम एक निर्दोष परिवार को सजा नहीं दे रहा है? देखिए, आपका ये नजरिया बहुत ही मानवीय है। एक परिवार का इस तरह से प्रभावित होना वाकई एक गंभीर चिंता है। लेकिन अगर हम इसे कानूनी ढांचे के नजरिए से देखें तो इसीलिए दस्तावेज में अपील की एक बहुत ही सुदृढ़ और समयबद्ध प्रक्रिया दी गई है। मतलब अपील करने का पूरा मौका मिलेगा? हाँ, किसी को भी बिना उचित मौका दिए सजा नहीं मिल सकती। अलग अलग मामलों में 15 दिन से लेकर 30 दिन या 90 दिन की सख्त समय सीमा तय है। जैसे मेडिकल अपील के लिए 90 दिन का समय है। तो मतलब ये पूरी व्यवस्था अब एक डिजिटल टोल प्लाजा की तरह काम कर रही है। डिजिटल टोल प्लाजा? वो कैसे? जैसे फास्टैग में होता है ना, अगर गाड़ी गुजरी और बैलेंस नहीं है तो बिना किसी इंसान के रोके बैरियर अपने आप गिर जाता है। हाँ, सही कहा। बिल्कुल वैसे ही अगर नियोक्ता समय सीमा चूका तो 12% ब्याज स्वतः लागू। अधिकारी 180 दिन चुका तो फाइल स्वतः पास। ये पूरी तरह से एक ऑटो पायलट व्यवस्था है जहां जवाबदेही पहले से तय है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। ये सिस्टम वाकई एक ऑटो पायलट की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए इस गहन चर्चा को अब समेटते हैं। आज के इस विश्लेषण से एक बात तो आईने की तरह साफ हो जाती है कि द सोशल सिक्योरिटी सेंट्रल रूल्स 2026 भारत के कामगारों के लिए सिर्फ एक नया कानून नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये लेबर फोर्स का एक बहुत बड़ा सिस्टम अपडेट है। पुराने 12 अलग अलग नियमों के उस उलझे हुए भंवरजाल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह एक पारदर्शी, पूरी तरह से डिजिटल और समयबद्ध प्रक्रिया ने ले ली है। हाँ। ये नया सिस्टम हर स्तर पर जवाबदेही मांगता है, चाहे एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक हो, किसी फूड डिलीवरी ऐप का एग्रीगेटर हो या फिर एक दिहाड़ी कंस्ट्रक्शन वर्कर हो। ये नया डिजिटल आर्किटेक्चर सबको एक ही पारदर्शी धागे में पिरो रहा है। बिल्कुल। पोर्टेबिलिटी और सामाजिक सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो ये दस्तावेज मील का पत्थर है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार उभर कर आता है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। वो क्या है? देखिए, आज हमने देखा कि अब निर्माण क्षेत्र से लेकर उस आजाद गिग इकोनॉमी तक सब कुछ सीधे तौर पर आधार और सरकारी पोर्टल से जुड़ गया है। टेक कंपनियां रोज का डेटा कि कौन कब ऑनलाइन आ रहा है, कौन दिन में कितने घंटे ऐप पर गुजार रहा है, ये सब एपीआई के जरिए सीधे एक सरकारी महासर्वर पर भेज रही हैं। हाँ, रियल टाइम में। मजदूरों के हक और पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था एक अभेद्य ढाल की तरह काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। सही बात है। लेकिन ये सब एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल भी छोड़ जाता है। क्या समाज एक सुरक्षित भविष्य और पक्की सामाजिक सुरक्षा के बदले अपनी पूरी पेशेवर निजता और अपने हर दिन के लोकेशन का डेटा इस डिजिटल महासिस्टम को सौंप रहा है? प्राइवेसी का सवाल। हाँ, एक तरफ एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा जाल है, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये एक तरह की सर्वेलेंस यानी निगरानी की शुरुआत नहीं है? सुरक्षा और निगरानी के बीच की ये बारीक लकीर आखिर कहाँ खिंचती है? और क्या हमने अपनी सुरक्षा के लिए वो लकीर पार कर ली है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। Welcome to This Explainer, where we're going to decode the massive new compliance framework that every single HR, payroll, and legal professional in India needs to know about. If you're the one responsible for keeping your organization compliant, well, you are definitely in the right place. Today, we're looking at the Social Security Central Rules 2026. And let me tell you, this isn't just some minor administrative update. It's a total, fundamental rewiring of how Social Security is managed, tracked, and enforced across the entire country. Okay, let's just take a second to grasp the sheer scale of this overhaul. 12. That is the number of completely separate, incredibly complex, historical labor rules that have just been wiped away. Gone. They've all been replaced by this single 2026 framework. We are literally talking about the end of fractured compliance. Everything, from maternity benefits and provident funds, all the way to gig worker welfare and construction cess, is now living under one unified procedural roof. So consider this your survival guide to the new code. We're going to structure our breakdown across 5 key areas. First, the 2026 digital overhaul. Then, employer contributions and compliance. Third, rules for gig aggregators. Fourth, expanded worker welfare benefits. And finally, strict timelines and penalties. We're going to move fast, but we'll cover exactly what you need to take back to your teams. Let's get into it. All right, Section 1, the 2026 digital overhaul. We're kicking off with what is arguably the most fundamental shift across all sectors, the move to a fully digitized system. So here's the deal. Those old physical paper-heavy processes, they are completely gone. The ecosystem is digital first now. Filing through the Shram Suvidha portal or the designated central and state portals is the new normal. And look at this, mandatory Aadhaar seeding. That is absolutely not negotiable. Whether we're talking about a building worker, an unorganized worker, or someone in an exempted establishment, benefits simply will not flow without that Aadhaar linkage. You'll also be uploading a unified annual return, known as Form 23, right at the end of February every year. Basically, the friction of the old paper chase is officially a thing of the past.
Moving right along to Section 2, Employer Contributions and Compliance. Let's shift our focus to traditional employer obligations and look at the new baseline financial mechanics. Here is a super clean breakdown of the contrasting contributions for the employee's state insurance. You've got the employer paying a 3.25% rate against the employee chipping in 0.75%, and both of these are calculated on payable wages and rounded right up to the next higher rupee. But here's a really fantastic detail from the new rules. For persons with disabilities, the employer's share is actually completely exempt for up to 3 years from the start of the contribution period. The central government just straight up reimburses the corporation. It's a really powerful incentive built right into the math. But listen, getting the math right is only half the battle. Beyond those financial calculations, maintaining meticulous records is now a hard compliance mandate. Attendance, wage records, specific registers for women employees, you have to keep all of these either electronically or physically. And here is the kicker. You have to preserve the originals for 5 full calendar years from the date of the last entry. 5 full years. If an inspector comes knocking on your door 4 years from now, you'd better have those files ready to go. Okay, Section 3. Rules for gig aggregators. This is huge because it builds the very first comprehensive legal framework for the gig and platform economy. It's completely new territory for a lot of tech and logistics companies. Now, what's really surprising here is this unique definition of a workday. To get benefits, a gig worker needs 90 days of engagement with a single aggregator or 120 days across multiple ones. But how do we actually define a day? Well, it's any calendar day a worker earns any income from an aggregator. So, get this. If a delivery partner works for 3 different food or ride apps on the exact same Tuesday, the law actually accrues that as 3 distinct engagement days toward their welfare eligibility. It's kind of wild, but it's a fascinating way the law is adapting to the reality of the multi-app hustle. If your company is an aggregator, you need to execute these steps urgently. The clock is ticking. You have just 45 days from the start of these rules to share details of your existing workers via API. And going forward, new gig workers have to be registered in real time or at least daily. When it comes to funding the Social Security for these workers, aggregators have to file a provisional contribution by June 30th. You do have the option to just contribute a flat 5% of the payments made to all your gig workers. And yes, that absolutely includes folks you hire indirectly through third-party associates. They are casting a very wide net here. All right, Section 4, Expanded Worker Welfare Benefits. Having covered what employers and aggregators need to do, let's see how these rules fundamentally expand the direct safety net for the workers themselves. The rules are incredibly specific now about how these safety nets deploy. Take a look at the strict fractional distribution for dependents benefits, which are anchored at 90% of the worker's standard benefit rate. A widow or widower receives a 3/5 share. Legitimate or adopted children up to age 25, they get a 2/5 share, and the exact same goes for parents. It mathematically ensures that families of workers who suffer fatal or severe workplace incidents are systematically supported with zero ambiguity. The framework also dramatically extends welfare for severe medical cases. Notice the stark contrast on this chart. Regular sickness benefit provides up to 91 days of coverage at 70% of the standard rate. But for specified severe diseases, the rules unlock an extended sickness benefit of up to 730 days at an 80% rate. I mean, that is 2 full years of financial protection for workers battling serious illness, assuming they meet the contribution criteria. It's a massive expansion of care. Maternity and childcare are also getting some highly specific mandates. The crucial point here is that physical creche compliance is rigorous. If you have 50 or more employees, you need a facility within a 1-kilometer radius offering 10 square feet per child. However, the rules do offer an alternative. You can swap the physical facility for a monthly allowance of at least 500 rupees per month per child for up to 2 children. But, and this is a massive but, you can only legally use this allowance option if a formal agreement is established with the majority of employees or the negotiating union. You definitely can't just unilaterally decide to hand out cash instead of building the room. Finally, we reach Section 5, Strict Timelines and Penalties. This is absolutely critical for corporate risk management. We need to talk about the high-stakes penalties and the relentless compliance clock. This timeline right here maps out the rhythmic urgency of the rules. The event-based clock starts ticking instantly. You have exactly 15 days to fix irregularities flagged by an inspector, 30 days to process and pay a gratuity application, 60 days to report the commencement of construction work. Missing these specific day counts? Yeah, it's not just a minor administrative oversight anymore. It triggers a cascade of severe legal consequences.
Which brings us to the elephant in the room. What is the true cost of default under these 2026 rules? As we process these strict deadlines, it's vital to ask what financial and operational risks your organization actually faces if these dates slip. Well, the government made sure these penalties have serious teeth. Late on aggregator contributions or construction cess, bam, automatic 1% interest per month. Delayed employee compensation, that hits you with 12% simple interest per year. Even just trying to appeal a cess penalty requires a non-refundable 0.5% deposit up front. And listen to this. Compounding an offense is a one-time lifeline. If you fail to deposit that compounding amount within 15 days, you are directly exposed to legal prosecution in a competent court. No second chances. This quote really hits the nail on the head. The legal text leaves zero room for ambiguity. It is an unyielding mandate for operational discipline. You know, those days of retroactive paperwork or saying, we'll just fix it at the end of the year, those mentalities are completely over. Real-time, digitized, and accurate compliance is literally the only way forward now. And that brings us to the end of our explainer. I want to leave you with this one vital question to consider. Are your internal payroll, HR, and legal systems genuinely aligned to survive this 2026 digital compliance regime? Take this blueprint back to your teams. Audit your current practices against these new statutes, and make absolutely sure your organization isn't just reacting to the law, but is fully ready for this modern era of Social Security. Because when that 2026 clock strikes, the grace period is officially over. Will you be caught counting the days or counting the cost? This video covers the Social Security Central Rules 2026, which were notified by the Ministry of Labor and Employment, Government of India, on May 8, 2026. The draft rules were published in December 2025, inviting objections and suggestions. They are illegally based on specific sections of the Code on Social Security 2020. Stakeholder feedback was considered before finalization. The new rules consolidate and supersede 12 earlier sets of rules, some dating back to 1924, streamlining decades of Social Security legislation into a single framework. Chapter 1 covers the short title and commencement. These rules, known as the Social Security Central Rules 2026, came into force on May 8, 2026, replacing 12 separate sets of rules. Key definitions include agency, which are established corporations or public sector undertakings, and electronically, covering digital submissions. Standard benefit rate defines average daily wages, and year refers to the financial year. More definitions include average daily wages, contribution period, and average daily wages, wage period, time rate for calculating wages. Benefit period and contribution period are defined as periods not exceeding 6 consecutive months. Career Center Central handles national-level employment functions, while Career Center Regional is notified by state governments. The Shram Suvita portal is the designated platform for electronic registration and compliance. Rule 3 outlines the process for establishments to opt out of Chapters 3 or 4. This involves an online application with majority consent, review by the authority within 60 days, and subsequent outcome. Key conditions apply. Rule 4 sets the income limit for dependent parents under Chapter 4 at 14,000 rupees per month. Rule 5 covers the registration process, requiring electronic application, certificate issuance within 7 days, and timely updates or cancellation decisions. Chapter 2 establishes the Social Security organizations. The Central Board, EPFO, administers provident, pension, and insurance fund schemes. The ESIC Corporation administers the Employees' State Insurance Scheme. The National Social Security Board oversees the welfare of unorganized, gig, and platform workers. Rules 6 and 7 detail the Central Board structure. Fund administration mandates deposits in approved banks and limits fund use to members. The Executive Committee composition includes central government, official, employer, and employee representatives. Rule 8 addresses the ESIC Corporation, Standing Committee, and Medical Benefit Committee. Corporation members serve 4-year terms. The Standing Committee has 15 members serving 2-year terms. The Medical Benefit Committee advises on standards and health measures for insured persons. Rule 9 governs the National Social Security Board. For unorganized workers, the board has a maximum 3-year term, with representatives from various sectors in government. The same board structure applies to gig and platform workers, with specific representation for them and a quorum of 6. Rule 11 establishes meeting frequency and quorum requirements. The Central Board and Corporation must meet twice a year. Executive and standing committees must meet 4 times a year. The NSSB and state BOCW boards must meet 3 times a year.
Ordinary meetings require 15 days notice. Chapter 3 covers EPF tribunal appeals. Rule 13 outlines filing procedures, including a 2,000 rupees fee and a 60-day time limit, extendable by 60 days. Appeals must be filed in English, and a 25% pre-deposit is required from the employer. Rule 14 details the tribunal procedure for filing in service. The process involves filing the appeal, registrar scrutiny, serving notice, and a hearing with a final order. Respondents must reply within 30 days of notice. Chapter 4 details the ESIC Director General and Financial Commissioner powers and duties. The Director General is the Chief Executive Officer, convenes meetings, and may delegate powers. The Financial Commissioner maintains accounts, prepares the budget, and arranges audits. Rules 15 and 16 govern ESI fund investment and expenditure limits. The ESI fund is invested per central government guidelines. The corporation may spend up to 1,000 crore rupees per year on health and welfare. Rule 17 addresses the holding of property and contracts. The Director General can dispose of movable property up to 1 crore rupees per case. Standing committee sanction is required for contracts over 25 crore rupees or common seals for contracts above 5 lakh rupees. Rule 18 covers the insurance of employees, involving employer registration auto allotment of the insurance number and employee updates. The number is used for all contributions and benefit claims and must be updated within 30 days. Rule 19 details the rate of contributions. The employer's contribution is 3.25%, and the employee's is 0.75%, both rounded to the next higher rupee of wages payable. There's a 3-year exemption for employer shares for employees with disabilities, reimbursed by the central government. Rules 20 and 21 cover administrative and funeral expenses. Administrative expenses cannot exceed 15% of total revenue income. For funeral expenses, the maximum amount is 20,000 rupees, which the corporation may revise over time. Rule 22 outlines sickness benefits. Sickness benefit requires 78 days of contributions, providing 70% of the standard benefit rate for up to 91 days. Extended sickness benefit offers 80% for up to 730 days. Maternity benefit grants 26 weeks of the standard benefit rate after 70 days of contribution. Disablement benefits include a full rate for temporary and permanent total disablement and a proportionate rate for partial disablement. Dependents benefit is paid on death from employment injury, with a daily rate of 90% of the standard benefit rate. A medical bonus of 15,000 rupees per case is available if ESIC facilities are unavailable. Rules 23 and 24 cover medical appeals. Appeals to the Medical Appeal Tribunal and the Employees Insurance Court must be filed within 90 days of the respective decisions. Late applications may be entertained if sufficient cause is shown. Rule 25 addresses medical benefit qualification and entitlement. Benefits applied during contribution periods or while receiving sickness or maternity benefits. First-time employees are entitled for 3 months. Permanently disabled persons can receive benefit for themselves and their spouse by paying 50 rupees per month annually in advance. Rule 26 describes the Employees State Insurance Society. State governments can establish the ESI Society. The governing body, chaired by the Chief Secretary, includes various representatives. The Executive Committee meets quarterly. The financial year runs from April 1st to March 31st. Rules 27 to 30 cover capitalized value, other beneficiaries, and fund administration. The capitalized value of permanent disablement and dependence benefit is calculated using a multiplication factor based on age. The ESI fund is deposited in RBI or approved banks. Payments over 1,000 rupees must be electronic or by check. Chapter 5 covers gratuity. Key provisions. Rule 31 mandates investing gratuity for minor nominees in term deposits. Rule 32 requires nomination in Form 3 within 90 days of 1 year of service. Rule 33 states the employee applies in Form 4 within 30 days of the gratuity becoming payable, with payment via draft or bank credit. Rule 33 outlines the gratuity dispute resolution process, starting with filing Form 6, followed by notice, hearing, an order within 6 + 3 months, and an appeal option. If an employer fails to pay, recovery can be sought under Section 129 using FORM 9. Chapter 6 discusses maternity benefit, certificate, and notice of claim. Proof of pregnancy is via FORM 10 from medical practitioners or a birth certificate. The woman provides notice in Form 11 to the employer. Wages under Section 65 must be paid within 48 hours of producing the Form 10 certificate. Rules 36 and 37 address nursing breaks and creche facility. Nursing mothers are entitled to 2 15-minute breaks daily, plus travel time.
Creche facilities are mandatory in establishments with 50 or more employees, located near the establishment and staffed by women with midwifery qualifications. Creche allowance is 500 rupees per month per child if a creche is not provided. Rule 38 defines gross misconduct and the appeal process. Gross misconduct includes willful destruction of property, assault, criminal offenses, theft, fraud, and willful non-observance of safety measures. Appeals are filed in Form 12 and disposed of by the competent authority within 3 months, extendable by 3 months. Rules 39 and 40 cover the inspector-cum-facilitator, complaints and duties. Complaints are filed in Form 13A. The inspector directs payment within 45 days if benefits are withheld. Appeals are filed in Form 13B. The inspector's checklist includes verifying notices, registers, and compliance with various sections of the Act. Chapter 7 focuses on cess collection for building and construction workers. Employers self-assess and pay cess in advance. For government works, cess is deducted at source and deposited within 30 days. Assessment is required when cess exceeds 10 lakh rupees. Excess advance cess is refunded within 30 days via electronic payment. Rules 42 through 44 cover cess interest, penalty, and appeals. Interest on unpaid cess is 1% per month. The appeal window is 90 days, with the appellate authority disposing of appeals within 60 days. The appeal fee is 0.5%, capped at 25,000 rupees and non-refundable. Penalty cannot exceed the cess in arrears. Rule 45 details the registration of building workers. Employers must register eligible workers within 30 days. Workers receive a digital identity card and must seed Aadhaar to generate a universal account number. Benefits are delivered electronically via direct benefit transfer. Eligibility requires being 18 to 60 years old and working at least 90 days in the preceding 12 months. Rules 46 and 47 address benefits and recovery. Rule 46 states that workers who have been beneficiaries for at least 3 continuous years before age 60 may qualify for central government schemes. Rule 47 allows the assessing officer to enter work sites, inspect records, and seize documents to recover dues. Chapter 8 focuses on Social Security for unorganized workers. Eligibility requires workers aged 16 and above to register on the central government portal using Aadhaar. A universal account number is issued upon registration, along with a downloadable digital identity card. Workers must periodically update their details to remain eligible for Social Security benefits. Rule 48 covers the registration of gig and platform workers. Aggregators must share existing worker details via API within 45 days and register new workers in real time or daily. Eligibility for benefits requires a worker to be engaged for at least 90 days with one aggregator or 120 days across multiple aggregators in the last financial year. Rule 49 covers aggregator contributions and refunds. Aggregators must provisionally pay contributions in FORM 20 by June 30th and file the final return in FORM 21 by October 31st Street. The contribution basis is either a percentage of annual turnover or 5% of the amount paid to gig/platform workers. Chapter 9 addresses finance and accounts, specifically the writing off of irrecoverable dues under Rule 51. The corporation, or NSSB, may sanction write-offs under 3 conditions related to closed establishments: inability to execute decrees against defaulting employers, or unmet claims by official liquidators. Rule 52 details the timeline for ESIC's accounts and annual report. The financial year ends on March 31st. The balance sheet is prepared by May 31st. Accounts are placed before CAG for scrutiny by June 15th, and the CAG report is received by November 20th. Chapter 10 outlines records, registers, and returns. Employers must maintain various registers. Records must be preserved for 5 calendar years. The Unified Annual Return, Form 23, is uploaded by February 28th or 29th. Wage slips must be issued electronically or in FORM 5 before paying wages. Rule 54 covers the compounding of offenses. The process involves a notice being issued, followed by an application and deposit. A certificate is then issued, preventing prosecution. Compounding is available for specified offenses under Section 138 of the Code. Chapter 12 discusses employment information and career centers. Under Rule 55, the government may establish or modify career centers, which function to collect employment information, provide career counseling, organize job fairs, and enhance employability. Rule 56 addresses the reporting of vacancies. Public sector vacancies must be reported before filling. Private sector establishments with 20 or more employees must also report vacancies in FORM 25.
Timelines vary for regional and central vacancies, and annual employment returns must be furnished in Form 26 by March 31st. Chapter 13 outlines employees' compensation key rules. Rule 57 states that delayed compensation, if unpaid within 30 days, accrues simple interest at 12% per annum. Rule 63 requires employers to inform new employees of their right to compensation in writing. Rules 58 to 62 cover compensation proceedings and transfer. This includes filing a notice for transfer to a competent authority, application for claims in Form 27, international transfer procedures under Rule 60, and the transfer of records using Form 30 as per Rule 62. Chapter 14 details the Social Security Fund's establishment and administration. The fund sources are credited under various sections of the Social Security and OSHWC codes. It is administered by the central government and audited by the Comptroller and Auditor General of India. Rule 65 details the eligibility for exemption, requiring superior employee benefits, 3 continuous years of compliance history with no default, a minimum of 500 contributory members or employees, and financial soundness, including a positive net worth. Rules 66 to 67 focus on exemption timelines and compliance. The central board or corporation must forward views on exemption applications within 6 months. Post-exemption compliance includes maintaining records and submitting returns, and a change in legal status cancels the exemption. Rule 68 governs the management of exempted establishment trusts. The Board of Trustees manages the Provident or Pension Fund, meeting at least once every 3 months. The employer serves as the chairperson. Interpretation disputes are referred to the central government. Rule 69 addresses the misuse of benefits. If the central government is satisfied that a benefit has been misused, the establishment may be deprived of the benefit for a specified period. Due process, including an opportunity of being heard, must be followed. Key forms cover the EPF tribunal and gratuity. Forms include FORM 1 for appeals, FORM 2 for appeal receipt, FORM 3 for nomination, and Forms 4 to 9 for various gratuity applications, notices, and recovery applications. Key forms for maternity benefit include Form 10 for medical certification of pregnancy or illness, FORM 11 for benefit claims and nominations, Form 12 for appeals against wrongful deprivation, and Forms 13A and 13B for complaints and appeals. Key forms for BOCWSES and gig workers include Forms 15 through 18 for BOCWSES information and returns. FORM 19 is for appeals against assessment orders. Form 20 covers self-assessment of aggregator contributions, and Form 21 is the final return for aggregators. Forms related to records, returns, and employment include Form 22, the Register of Women Employees. Form 23 is the Unified Annual Return. Form 24 handles the compounding of offenses. Forms 25 through 27 cover vacancy reporting and employee compensation claims. The chapter-wise structure of the rules covers preliminary, organizations, EPFO, ESIC, NSSB administration, gratuity, maternity benefit, BOCWSES, finance, unorganized gig workers, offenses compounding, records returns, employment, compensation, and miscellaneous. The key takeaways emphasize a unified framework, a digital-first approach for all transactions, expanded coverage for gig and unorganized workers, and defined timelines for processes. These rules consolidate India's labor social security framework, effective from May 8, 2026. This video is a professional compliance presentation on the Social Security Central Rules 2026. These rules were notified by the Ministry of Labor and Employment, Government of India, under the Code on Social Security 2020. The rules were framed under various sections of the Code on Social Security 2020, providing a procedural framework for Social Security benefits. They supersede 12 earlier rules and are effective from the date of publication in the Official Gazette. Rule 2 defines key operative terms, consolidating procedural law across 9 major streams, including Provident Fund, ESI, gratuity, and Social Security for unorganized/gig/platform workers. Key definitions cover standard benefit rate, contribution period, benefit period, and average daily wages, along with terms like agency and universal account number. Chapter 2 covers the Central Board of EPFO, which administers provident, pension, and insurance funds. All monies must be deposited with approved scheduled banks. Chapter 3 outlines EPF tribunal procedures, including a 60-day appeal period and a mandatory pre-deposit of 25% of the amount determined as due.
Chapter 4 details ESI contribution rates, 3.25% for employers and 0.75% for employees. Key benefits include sickness, extended sickness, maternity, and disablement benefits. Appeals must be filed within 90 days. Employer ESI contribution for persons with disability is exempt for up to 3 years. Dependents' benefit is payable at 90% of the standard benefit rate. Shares are proportionately reduced if the aggregate exceeds the full rate. Distribution varies by relationship, with specific durations like until remarriage, age 25, or for life. Medical benefit is also available during specific periods. Chapter 5 covers gratuity procedures. Nomination in FORM 3 is required within 90 days for existing employees. Application in Form 4 must be filed within 30 days of gratuity becoming payable. Disputes are resolved by the competent authority within 6 months. Fixed-term employees are eligible after 1 year of service. Chapter 6 covers maternity benefit, including evidence, claims, and compliance. Wages are payable within 48 hours of Form 10 production. Establishments with 50 or more employees must provide a creche facility. Gross misconduct under Section 68 can lead to disqualification. Appeals against misconduct must be disposed of within 3 months. Chapter 7 focuses on cess and welfare for building and other construction workers. Filing Form 15 is required within 60 days of work commencement. Self-assessment must be certified by a chartered engineer. Default consequences include a 1% per month interest penalty. Appeals in FORM 19 must be filed within 90 days. Building worker registration requires workers aged 18 to 60 with at least 90 days of work in the preceding 12 months. Registration is completed with Aadhaar and a universal account number. Migrating workers' registration must be updated within 30 days. Continuous beneficiary status of 3 years before age 60 grants long-term entitlement. Chapter 8 addresses unorganized, gig, and platform workers. Registration requires a minimum age of 16 and a universal account number. Aggregators must share worker details within 45 days. Eligibility for benefits requires at least 90 days of engagement. Provisional and final contributions must be filed annually. Chapter 9 outlines the ESIC annual cycle. Key dates include the 31st of March for balancing books, the 31st of May for revenue accounts, and the 15th of June for annual accounts to the Comptroller and Auditor General. Irrecoverable dues can be written off under specific conditions. Conviction under Section 133(0) results in denial of cash benefits. Chapter 10 mandates several registers: Register of Employees, Attendance cum Muster Roll, Wages/Deductions, and Women Employees Register. Records can be electronic and must be preserved for 5 calendar years. Wage slips must be issued before payment of wages. The Unified Annual Return, Form 23, is due by the 28th or the 29th of February annually. Chapter 11 covers compounding procedures for offenses. The compounding notice is issued electronically in FORM 24. The composition amount must be deposited within 15 days. Failure to deposit can lead to prosecution after 1 month. Compounding is a one-time procedural facility and does not bar civil recovery. Chapter 12 details employment information and monitoring. Public sector establishments must report every vacancy before filling it. Private sector establishments with 20 or more employees must report. A unique vacancy number is generated within 3 working days. Annual returns, Form 26, are due within 30 days of the 31st of March. Chapter 13 concerns employees' compensation. Non-payment within 30 days incurs 12% annual interest. Claims require Forms 27 and 28. Employers must inform employees of their compensation rights at the time of employment. Chapter 14 deals with the Social Security Fund, whose accounts are audited by the CAG. Misuse of benefits can lead to deprivation for a specified period. Exemptions under Section 143 for EPF or ESI require substantially similar benefits, 3 years of unbroken compliance, and at least 500 contributory members. A cumulative balance of 50 crore rupees or more is needed. Aadhaar seeding for all members and an online portal link are mandatory within 90 days. Exemptions can be extended for 5 years at a time, but a change in legal status cancels the exemption. This slide provides a consolidated reference for fines, penalties, interest, and damages. Late payments for cess or aggregator contributions incur 1% interest per month. Late employee compensation draws 12% simple interest. Penalties for defaults often follow a hearing.
and conviction under Section 133(0) can deny cash benefits for months. Records must be preserved for at least 5 calendar years. The yearly compliance calendar and event-based timelines are critical. Key annual dates include filing the Unified Annual Return by February 28-29. Event-based timelines vary. 15 days for EPF defect removal, 30 days for gratuity payment, and 90 days for cess appeal. Records must be preserved for 5 years from the date of the last entry. Key takeaways emphasize the single procedural framework, digital-first compliance, and the non-negotiable nature of Aadhaar seeding for benefits. Strict timelines drive enforcement. There's a special focus on gig workers, requiring 45-day onboarding and a 5% contribution. All records must be preserved for 5 years. Welcome to the 2026 Social Security Playbook. This video details the central rules framework for employers, aggregators, and contractors. The Social Security Central Rules 2026 consolidate 12 laws into one core framework. Key mandates include digital-first registration, mandatory Aadhaar seeding, and record retention for 5 calendar years. The Workforce Divide Matrix compares traditional employees and gig/platform workers. Key differences include governing paradigms, employer or aggregator costs, facility thresholds, and compliance rhythms, such as monthly filings versus real-time API tracking. Statutory financial contributions include ESI and aggregator breakdowns. ESI is split between employer and employee shares, with an exemption for persons with a disability. Aggregators have a 5% flat contribution rate. The cash benefit matrix outlines 3 types of benefits: sickness benefit, extended sickness benefit for specified diseases, and disablement benefit. Each have distinct rates, triggers, and caps. The benefit distribution tree illustrates how the full benefit rate is distributed among dependents like widows, sons, daughters, and parents. A critical rule ensures claims exceeding the full rate are proportionally reduced. Maternity and childcare mandates include a 12-week total maternity benefit, payment triggers, and a medical bonus. For companies with 50-plus employees, a creche must be provided or an allowance offered, along with nursing breaks. The gratuity compliance lifecycle involves 3 steps. Step 1 is nomination, Step 2 is application, and Step 3 is notice and payment. All steps have specific timelines, and disputes must be resolved within 6 months. The gig eligibility funnel requires a minimum age of 16. Engagement metrics include 90 days with a single aggregator, or 120 days across multiples. Successful authentication results in a downloadable digital identity card and UAN. The aggregator digital mandate requires sharing worker details via API within 45 days and real-time tracking of new registrations and exits. Annual reporting includes provisional and final returns. The penalty for default is 1% interest per month. The cess capital flow diagram outlines self-assessment and advance payment. Scrutiny is triggered only if the self-assessed cess exceeds 10 lakh rupees. Risk involves 1% monthly interest on default and a penalty up to 100% of cess. Construction workforce portability registration requires being 18 to 60 years of age and 90 days of construction work. Registration is seeded with Aadhaar and UAN. The long-term benefit is 3 years of continuous beneficiary status before age 60. The radial compliance calendar highlights key dates for annual compliance. These include deadlines for the Unified Annual Return, provisional and final aggregator contributions, and the submission of accounts to the central government. The consequence matrix details various triggers and their consequences. These range from simple interest for late payments to denial of cash benefits for conviction under Section 133(0) and prosecution for failure to deposit compounding amounts. The architecture of compliance is built on the Universal Account Number and Aadhaar seeding. This system utilizes real-time APIs and central designated portals to move compliance from historical auditing to API-driven, verified data streams. Welcome to this professional compliance briefing on the Social Security Central Rules 2026. These rules were notified by the Ministry of Labor and Employment, Government of India, and are effective from the date of publication in the Official Gazette. The new architecture consolidates 12 fragmented frameworks into a unified core. This includes a singular harmonized procedural law for Provident Fund ESI, gratuity, maternity, compensation, cess, and the gig/platform economy. A digital-first administrative backbone is established through mandatory Aadhaar seeding for registration and benefit distribution. It also introduces a universal identity via a digital ID card and universal account number, UAN, for all registered workers. All critical filings must occur electronically via centralized portals.
The rules address the gig and platform economy with specific mandates. Aggregators must share worker details via API within 45 days. Eligibility is defined after 90 days of engagement with a single aggregator, or 120 days cumulatively across multiple aggregators. Engagement is defined as any calendar day on which income is earned from the aggregator. The Core Financial Contribution Matrix outlines contributions. ESI Corporation involves 3.25% of payable wages from the employer/aggregator and 0.75% from the employee. The gig and platform sector contributes 5% of payments made to workers where opted. ESI admin is capped at 15% of total expenditure. The rules ensure guaranteed enhancements to traditional benefits. Maternity benefit includes 12 weeks of paid leave and a 15,000 rupee medical bonus. Sickness and extended care provides 70% of the standard rate, and disablement and dependence offers 90% of the standard rate with specific shares for beneficiaries. Gratuity guardrails include fixed-term inclusion after just 1 year of service. The 30-day payout pathway mandates application, notice, and total payout within 30 days of application receipt. Failure to comply triggers an automatic 12% per annum simple interest penalty. For the building sector, the rules mandate engineers' certified assessment for cess payment. The 180-day scrutiny limit applies to assessing officers, after which the self-assessment becomes legally final. Worker portability ensures migrating workers update their registration within 30 days in a new state. The compliance clock sets critical employer action windows, ranging from 15 to 90 days. Key actions include fixing EPF appeal defects, processing gratuity payments, and submitting building work returns. Unified reporting demands absolute transparency. The 5-year preservation rule requires keeping all primary records. The rules define 4 core registers to maintain records for employees, attendants, wages, and women employees. The Unified Annual Return, Form 23, must be uploaded online by February 28th or 29th each year. Default comes with serious consequences. Financial penalties include 1% monthly interest on defaulted contributions and 12% annual interest on delayed compensation. EPF tribunal appeals require a mandatory pre-deposit of 25% of the determined due amount. Default can lead to benefit denial or ultimate recovery of sums due as arrears of land revenue. The complete ecosystem synthesizes 3 core elements: employer diligence, the digital portal core, and worker security. The 2026 rules aim for seamless benefits and 0 penalties by aligning internal payroll and HR systems with the mandated digital architecture. Welcome to this professional compliance video on the Social Security Central Rules 2026. This video is made under the Code on Social Security 2020 and was notified by the Ministry of Labor and Employment, Government of India. It is prepared for management and compliance teams. The Social Security Central Rules 2026 are subordinate legislation superseding 12 earlier rules that previously governed individual Social Security enactments. These rules draw power from Sections 154, 155, 158, and 159 of the Code on Social Security 2020. The 12 superseded rules are listed here. The purpose of these rules is to consolidate, harmonize, and modernize procedural law across 9 major Social Security streams. These rules apply across the central sphere, providing the primary procedural reference for various entities including employers, gig and platform workers, and tribunals. This video will cover every chapter of the rules in detail. Chapter 1, Rule 2, defines key terms. Code refers to the Code on Social Security 2020. Fund includes ESI, Provident, Pension, EDLI, and Social Security funds. Electronically covers submissions by email, portal uploads, or digital payment. Several terms relate to calculating average daily wages, benefit and contribution periods, and the standard benefit rate. Continuing with key definitions, an appellate authority is the central government or a senior officer. An assessing officer is a gazetted officer for cess assessment. Terms like chartered engineer, career center, nodal officer, and Shram Suvita portal are also defined. Finally, nomination is made under Section 55 of the Code, and excluded vacancies are defined under the relevant sections. Chapter 2 outlines the Social Security organizations. The Central Board of EPFO administers funds per central government guidelines. This chapter covers the constitution and meetings of the central, state, and national Social Security boards.
A dedicated board for gig and platform workers is also established. The EPFO Central Board is the apex body for managing Provident, pension, and EDLI funds. Chapter 3 covers Employees' Provident Fund Tribunal procedures. Key requirements include that the language of the tribunal is English, with documents potentially filed in Hindi. An appeal must be filed within 60 days, with a 25% pre-deposit. Timelines are set for removing defects, respondent replies, restoration applications, and substitution due to the death of a party. Chapter 4 addresses employees' state insurance corporation contributions. The employer's contribution is 3.25% of wages payable, and the employee's contribution is 0.75%. The admin expenses cap is 15% of total ESIC expenditure, and the funeral expenses benefit is 20,000 rupees. Note that employers of persons with disability are exempt from their contribution share for up to 3 years. Chapter 4 also details ESIC benefits. Sickness benefit is 70% of the standard rate, with specific contribution period requirements. Extended sickness benefit is the full sickness rate for up to 730 days. Other benefits include maternity benefit, disablement benefit, dependence benefit, medical benefit, and funeral expenses. Regarding appeals, there is a 90-day timeline to appeal to the Medical Appeal Tribunal, and another 90 days for a second appeal to the Employees' Insurance Court. Conviction results in cash benefit denial for 3 months for the first conviction and 6 months for subsequent convictions. Compliance is crucial, as delayed contributions can lead to penalties and interest. Chapter 5 covers gratuity procedures and timelines. Important timelines include nomination within 90 days of completing 1 year of service for new employees, and the employer verifying the duplicate within 30 days of receipt. Applications for gratuity must be made within 30 days of it becoming payable. Fixed-term employees are eligible for gratuity if they serve at least 1 year. Gratuity for a minor nominee must be invested by the competent authority in a term deposit with a nationalized bank. Payment is made by demand draft or bank credit. If an employer refuses, the claimant may apply using Form 6 within 180 days. Chapter 6 details key provisions for maternity benefits. Medical evidence is required using FORM 10. Notice of claim is FORM 11. Wages under Section 65 are payable within 48 hours of FORM 10. Nursing breaks are 2 15-minute breaks, with up to 15 minutes for travel. Creche facilities are mandatory for establishments with 50 or more employees. This slide covers appeals and inspector provisions for maternity benefit. Appeals against gross misconduct use, FORM 12. Complaints to the inspector-cum-facilitator use Form 13A, and payment must be directed immediately, not exceeding 45 days. A medical bonus of 15,000 rupees per case is paid with the benefit. The employer cannot condition maternity benefit on the employee returning to work. Chapter 7 focuses on cess and welfare for building and other construction workers. Information on work commencement is furnished via FORM 15 within 60 days. Cess payment is done at the time of approval. Government deductions are deposited within 30 days. The cess transfer to the board's fund happens within 30 days of collection. Building workers must register on a designated portal within 30 days of becoming eligible. Eligibility includes being 18 to 60 years old and having at least 90 days of construction work in the last 12 months. Continuous beneficiary status of 3 years before age 60 qualifies a worker for central government schemes. Interest on delayed cess is 1% per month. Chapter 8 addresses registration for unorganized, gig, and platform workers. These workers register on the designated central government portal. Eligibility for benefits requires a single aggregator engagement of at least 90 days, or multiple aggregators for 120 cumulative days in the last financial year. Aggregator contributions involve a provisional contribution via Form 20, payable by June 30th, and a final return, Form 21, filed by October 31st each year. Interest on default is 1% per month. Cessation of eligibility occurs upon reaching age 60, or non-engagement for 90 days for a single aggregator, or 120 days for multiple aggregators. Chapter 9 covers finance and accounts. Books must be balanced by March 31st. Revenue accounts and the balance sheet must be prepared by May 31st. The annual report is placed before the Standing Committee and adopted before December 10th. Irrecoverable dues may be written off if the establishment has been closed for over 5 years. Chapter 10 details compliance, including records, registers, and returns. Registers, such as the employee register and attendance cum-muster roll, must be maintained at or within a 3-kilometer radius of the workplace. Records must be preserved for 5 calendar years. The Unified Annual Return, Form 23,
is uploaded online by February 28th or 29th. Chapter 11 covers compounding of offenses. A compounding notice, Form 24, is issued electronically. The noticee has 15 days to deposit the compounding amount. Compounding extinguishes liability for prosecution upon issuance of the composition certificate. Chapter 12 outlines employment information and monitoring requirements. Public sector vacancy reports use Form 25 with deadlines of 40 or 15 days. Employers must maintain detailed employee records, including vacancies and recruitment. Existing employment exchanges function as career centers until new centers are notified. Chapter 13 details employees' compensation provisions. Claim and settlement applications require Form 27 and FORM 28. The transfer of jurisdiction and records uses Forms 29 and 30. A critical alert is that delayed compensation, if not paid within 30 days, is subject to 12% per annum simple interest. Chapter 14 covers miscellaneous provisions. The Social Security Fund's receipts are credited and audited by the CAG. Eligibility for exemption requires substantially similar or superior benefits. Exemption is canceled upon change of legal status, requiring a fresh application. Misuse of benefits may lead to deprivation after a hearing. This is the first part of the formal summary of 40 key points. The rules supersede 12 earlier rules and enable all submissions to be made electronically. Key points cover ESIC contributions, funeral expenses, administrative expenses limits, benefits for persons with disability, and formulas for sickness and disablement benefits. The second part of the summary continues with points 11 to 20. Highlights include the medical bonus for maternity and deadlines for EPF tribunal appeals. Gratuity nominations must be filed in Form 3, and applications must be disposed of within 6 months. Gratuity for minors must be invested by the competent authority. Points 21 through 30 focus on maternity, creche, and construction workers. Wages for maternity benefit must be paid within 48 hours. Creches are mandatory in establishments with 50-plus employees, or an allowance can be provided. BOCW cess must be paid in advance, and unorganized workers can register on the central government portal. The final summary section, points 31 to 40, addresses gig economy compliance, interest on default, and annual accounts. Aggregators must share worker details and make provisional contributions by June 30th and final returns by October 31st Street. Compensation delays and compounding notice responses have strict timelines. This slide outlines event-based compliance dates and timelines. Events such as the death of a party, gratuity becoming payable, or change in construction project details each trigger-specific actions with defined deadlines, ranging from 15 days to 2 months. This chart details annual and periodic compliance deadlines. Key dates include February 28th or 29th for uploading the Unified Annual Return, March 31st for balancing ESIC books of accounts, and June 30th for aggregator provisional contributions. This table lists fines, penalties, interest, damages, and consequences. Delayed employee compensation and BOCW or aggregator contribution defaults incur 12% or 1% interest, respectively. Non-payment of compounding amounts leads to criminal prosecution. Misuse of benefits can result in deprivation. This slide provides benefit and calculation formulas. It defines the standard benefit rate, average daily wages for contribution and wage periods, and calculations for sickness benefit and BOCW cess. Disablement and dependence benefit rates are also specified. Here are the detailed formulas for ESIC contribution and gratuity for fixed-term employees. The total ESIC contribution is 4% of wages, rounded up to the next higher rupee. Fixed-term employees qualify for gratuity after at least 1 year of service, with residual service rounding rules. Key takeaways for management include the consolidation of rules into a single unified framework, emphasizing digital-first compliance. Strict deadlines for ESIC contributions and gratuity/maternity claims are mandatory to avoid penalties. Gig economy compliance is now statutory, and creche provisions carry compoundable liability. In conclusion, the Social Security Rules 2026 represent a major reform, unifying 12 rule sets and extending social protection to the gig economy. Employers must immediately update their compliance calendars. Proactive compliance is the only sustainable strategy under this unified and penalty-laden framework.